circle. In this is a circle, and this is the center point, that is called center point. And here we know that this is circle and this is center. अब हम यहाँ देखेंगे कि ये सेंटर पॉइंट से कोई भी लाइन, जो कोई भी रेखा जो आपके परिधि को टच करती है, द लाइन विच from center drawn to the circumference to the circle, this is called radius. Radius जिसे हिंदी में हम त्रिज्या भी कहते हैं. Is that clear? अब इसी प्रकार अगर कोई रेखा सर्कल के सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस से टच होती हुई सेंटर तक जाती है और वो इस पर टच होती है, और उसके बाद अगर वो लाइन आपके सर्कमफ्रेंस से टच होकर दूसरी तरफ टच करती है, तो ये आपके डायामीटर कहलाती है. इज दैट क्लियर? इसे हिंदी में हम व्यास भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ अब वी हैव टू लुक दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज सेंटर एंड दिस इज ए कोर्ड. दिस वन इज नोन एज कोर्ड, जिसे हिंदी में हम जीवा भी कहते हैं. नाउ अब ये हमने एक देखा, ये छोटा पार्ट है. दिस इज ए मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज माइनर segment. This one is minor segment, and this is a circle. This is center point. This is radius. This is another radius. Now the part between these two radius is minor sector. This one is minor sector, and this is the large sector, that is major sector. Is that clear? Now we know about radius and diameter. Now this one is circle and this is given to you 7 centimeter. That is your radius. Now here is given to you radius. Radius is equal to diameter upon 2. D represent here. D is equal to diameter and R is equal to रेडियस. इज दैट क्लियर? रेडियस जो होगी आपके सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस, जो सर्कल की परिधि है, वहां तक खींची गई एक लाइन आपकी त्रिज्या होगी, और डायमीटर आपका क्या कहलाएगा? जो सेंटर पॉइंट को टच करते हुए जो स्ट्रेट लाइन जाती है, ये आपका डायामीटर कहलाता है, जिसे हम हिंदी में व्यास भी कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ अगर आपको बोला गया है कि दिस इज ए रेडियस and radius is given to you 7, then what is diameter? Diameter is equal to D is equal to 2 into R. यहाँ ये दोनों फार्मूले देखने लायक हैं कि अगर आपको डायमीटर पूछा है तो आप 2 into R कर देंगे, और अगर आप रेडियस पूछा है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ देखिए डायमीटर इज इक्वल टू 2 into R, तो R into 2 या 2 into R एज इट इज 2 multiply R, यानी रेडियस का डबल. तो यहाँ 2 multiply R is given to you 7, that is 7 centimeter. Now 2 7 जा 14, that is 14 centimeter. So we know about that radius is 7 centimeter, then diameter become 14 centimeter. How can this is possible? It is possible due to the 2 multiply by 7, we get 14 centimeter as our diameter. Is that clear? Now come to the next point, that is a diameter. This one is diameter is given to you 14 centimeter. Diameter is given to you 14 centimeter, and asking that find radius. Find radius, that is radius is equal to diameter divided by 2. So diameter is given to you 14, that is 14 divided by 2, we get 7 centimeter. 14 centimeter divided by 2, we get 7 centimeter is our answer. Is that clear? So this is the relation between diameter and radius, that is radius is equal to D diameter
divide by 2. It means the radius is the half of diameter and the diameter is the double of radius. Now this is circle and this is radius and this one is diameter and this one is chord. We know very well. Now in that case the circumference of circle is equal to 2 pi r. Pi is equal to 22 upon 7 or 3.14. Is that clear? That is the pi. Pi की जो वैल्यू होगी आपके 22 upon 7 and this is 3.1 अगर 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आपको अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम यहाँ 22 upon 7 का ही यूज करेंगे. Now given to this question that is radius is 7 centimeter. Find circumference. Find circumference. So you have to find circumference is equal to 2 pi r. 2 multiply 22 upon 7 multiply 7 because 2 is given to you, then pi की वैल्यू 22 upon 7 वो आपने यहाँ पुट कर दी है, multiply 7 is radius to you given 7, r is 7, we have to write here 7. Now 7 1 ja 7 and 2 multiply by 22 that is 44 centimeter is your answer. Is that clear? So you can easily find out the circumference of the circle by using this formula 2 pi r. That is diameter, radius is given to you 7 centimeter. If we have to find circumference with the help of diameter, now by using diameter we have to find circumference. This is your diameter that is given to you 21 centimeter. Now find circumference. So we have to know that circumference of circle is 2 pi r. Here 2 into r that is diameter. मैंने कहा था diameter is equal to 2 into r and r is equal to d upon 2. r रेडियस कैसे निकालेंगे? डिवाइड करेंगे डायमीटर को 2 से और डायमीटर कैसे निकालेंगे? रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. रेडियस शुड बी मल्टीप्लाई बाई 2. तो 2 इंटू आर, यहाँ देखिए 2 और r दे रखा है 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर की जगह हम डायमीटर भी लिख सकते हैं. तो यहाँ आपका फार्मूला बन जाएगा पाई डी. इन द केस ऑफ डायमीटर इज गिवन टू यू. नाउ यू हैव टू राइट, you should write here like 22 upon 7 that is value of pi multiply diameter is given to you 21, so you have to write 21. Now 22 upon 7 multiply by 21, 7 1 ja 7, 7 3 ja 21. In that case 22 multiply by 3 that is 66 centimeter is your circumference of the given circle. Is that clear? Now here is asking to you that find out area of circle. That is area of circle. Area of circle is pi r square. Area of circle is pi r square. Now you have to find area of circle that is 7 centimeter. And asking that find out the area of circle that is area. R is given to you 7 centimeter. Now area is pi r square. पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22 upon 7 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर यानी 7. R is given to you 7 into 7. Now this is the value 27 1 ja 7 और 7 1 ja 7. 7 से 7 कट गया. Now 22 multiply by 7 we get 7 2 ja 14 carry 1 7 2 ja 14 and 1 15. So 154 centimeter square is your answer. Now area of the circle is 154 centimeter square. If circumference of circle is 1
54 centimeter. 154 centimeter. Find radius. अगर आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है 154 सेंटीमीटर और आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, देन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर, दैट इज 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर था और यहां आप 154 सेंटीमीटर लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 22/7. आर की वैल्यू आपको पता नहीं, 154. नाउ 22 to 44/7 into r, that is 154 centimeter. Now r you have to put r here and 144 जब उधर ट्रांसफर होगा then it becomes 154 multiply, it becomes reciprocal 7/44. Now 11 4 ja 44 and 11 1 ja 11. We have 4 remains. Now 11 4 ja 44. Now you have to write here 114 into 7/4. Now 14 7 ja now 2 4 ja 2 2 ja 4, 2 7 ja 14. Now 7 7 ja 49 and नीचे क्या आपका 2 रह गया. 2 1 ja 2 2 ja 4 and 2 4 ja 8. Now 1 2 5 ja 10. Is that clear? So r is 24.5 centimeter. Is that clear to you? So once again you have to understand this. This is center and this one is radius and this one is diameter and this one is chord. Is that clear? Now radius is equal to divide diameter by 2 and diameter is equal to diameter is equal to radius upon radius. 2 multiply radius and circumference of circle is 2 pi r and area of circle is pi r square. Now pi r square is the area of circle.